USA. The perfect dose to your entertainment. इफ यूर अ म्यूजिक लवर, अगर आप किसी आर्टिस्ट को पसंद करते हैं तो आई एम श्योर कि लाइफ में एक बार ही सही उनका लाइव कॉन्सर्ट देखने का आपका भी सपना होगा। तो चलिए इसी सपने को पूरा करने आ गई हूँ मैं उर्मिन, एंड वेलकम टू द स्पेशल एपिसोड ऑन देसी वेब यूएसए कॉल्ड साउंड चेक विद उर्मिन, जहां आपके फेवरेट आर्टिस्ट एक स्पेशल साउंड चेक देंगे ऑफ देयर म्यूजिक एंड सुनाएंगे हमें कहानियां, किस्से बिहाइंड एवरी सॉन्ग। सो लेट्स बिगिन। आज की हमारी आर्टिस्ट इज समवन who's truly made it big and real quick. She's very popular among the millennials and is breaking records with every new song that she comes out with. भाई हाल ही में इनका ब्रांड न्यू गाना आकर इनको हर कोई अब बेबी गर्ल बुलाना शुरू कर रहा है। प्लीज वेलकम टुडे ऑन द शो ध्वनि भानुशाली। हाय ध्वनि। Hi, how you doing? Oh my god, oh this is so cool. Oh my god! अच्छा, शो है देसी वेब यूएसए पर, ओके, बट वी कैन गो ऑन देसी, या Yeah, for sure. We just have to be ourselves. of course. First of all, let me just go ahead and tell you that we are starting the show with you. So ध्वनि, मैंने सुना है कि आप बहुत लकी हैं, अच्छा, मैंने आपको बताया था स्टार्टिंग में, आपने मेरी लाइन चोरी कर। which is also true. लेकिन मैंने इसे तो मैंने कहा ना, मैंने सुना है क्योंकि आपने मुझे बताया। हाँ, मैं मजाक कर रही थी, बट आई जस्ट होप मैं आपके लिए लकी रहूं और आपके सब एपिसोड्स अच्छे रहे और आप बहुत तरक्की करें। अरे क्या बात है, मेरा आशीर्वाद है आपको। ये क्लोजिंग लाइन ओपनिंग बन गई यार, दैट्स सो कूल। बट टेल मी वन थिंग, आपकी शुरुआत हुई लाइक इन द फिल्म इंडस्ट्री इन 2018, Yeah. बट you've always been surrounded with music. साथ ही साथ आप अपनी पढ़ाई भी पूरी कर रही थी, you were in the midst of everything. तो कैसे, how did you think of getting into films and doing playback? इनिशियली मैं कवर्स करती थी, मुझे सिंगिंग का बहुत शौक था, तो मैं स्कूल में तो क्वायर में गाती थी, गॉस्पेल गाने गाती थी। उसके बाद आई सेड चलो कवर्स करते हैं, छोटी मोटी ऑडियंस बन जाएगी, कुछ तो लोग प्यार करेंगे। तो कितनी हम्बल है हमारी लड़की। to God. So that's how I started doing cover songs, and then I got a call for my first playback from Shami Tandon with Rahat Saab. The song was called Ishtihar. Okay, And that was in a Sonakshi Sinha Diljit Dosanjh movie, Right. Welcome to New York. Yeah. तो वो गाना बड़ा सुंदर था, and I was very inclined towards the melody and the lyrics. So then, और वैसे भी beggars are not choosers, so I was like, bro, I'm definitely doing this. And I went and I dubbed the song. So first day I was really scared, but the second day I nailed it in like 45 minutes. So that's how my playback started. But I always wanted to do pop, like always wanted to have a career in mainstream pop. And उस गाने के बाद जब दिलबर हुआ, so उसके बाद I was performing at some Hangama, artist loved some show, and I did like 2 songs, and then that's when Where Radhika saw me, and they're like, we will pave the path for you, but you have to listen to everything we say. So they have literally guided me through everything from losing my weight, because I was a chubby kid, and to everything. Not like everyone needs to lose weight. This is just my personal prerogative. Chubby is amazing. I mean, I know a lot of chubby friends. Chubby is the shit. best. Like I know one who's just like right in front of the mirror. I see her every day, and she's just awesome. Bro, you're actually damn good looking. This is the one. Yeah. हाँ, तो फिर you started like working on yourself and Riyaz and this and that and everything, like dance and everything. So वो हुआ, फिर then we shot for Le Ja Re, then we shot for Main Teri Hu, then we shot for Vaasudev, which has now made history. Yes. So crazy.
fastest growing, मतलब कितने how many million billions has it created? 1 billion. क्या फील है यार, क्या फीलिंग आ रही होगी सीरियसली, दिस इज ग्रेट यार. सो हाँ, 2 दिन तो खाली रो ही रही थी मैं, 2 दिन से रो रही थी. उसके बाद थोड़ा थोड़ा अंदर से ऐसा लगा कि अच्छा बेटा बस कर दूं. अभी कुछ आगे काम करना है ना कि नहीं करना है, बस करो. Let me get this right. So every time somebody would say, अरे बिलियन हो गया. Bro, no, not like that. I got up and I was like, I was so happy. I didn't know how to react. So when I don't know how to react, I cry. In case in this interview Dhwani starts crying, it's only because she doesn't know how to react. Please. I don't cry when I'm sad. I just keep quiet when I'm sad. I cry when I don't know how to react to things. Amazing यार. अच्छा यार हम इस बातें कर रहे हैं, we're talking about your first hit लेजा लेजा. How about we hear a little bit? मुझसे दूर कहीं ना जा, बस यही कहीं रह जा, मैं तेरी दीवानी रे, अफसोस तुझे है क्या. मुझसे दूर कहीं ना जा, बस यही कहीं रह जा, मैं तेरी दीवानी रे, अफसोस तुझे है क्या. तेरी मेरी कहानी नहीं बन गई, तू मेरा हो गया, मैं तेरी हो गई. जहाँ जाए तू संग मुझे ले जा, ले जा, ले जा, ले जा रे, महकी रातों में चुरा के सारे रंग ले जा. Thank you. Amazing, क्या बात है. और ये गाना ऑफिशियली सबका शादी गाना बन गया है. It's become their video song and everybody. सब शादियों में डांस करते हैं इसको. Super, yeah, that's something. But really, मुझे लगता है कि शादी वाले गाने सबसे स्पेशल होते हैं. 100%. It's for a celebration. Of course. So after Leja Leja, I really think that the song that has again created history. क्या आपको लगा था जब आप इस गाने को रिकॉर्ड कर रही थी, जब वास्ते रिकॉर्ड कर रही थी, तो क्या आपको लगा था कि it's going to like create some another kind of record? I knew it was a special song, but I didn't know it's going to be 1 billion. ऐसा कौन सोचता है? मतलब मैं dream तो, you always dream about good things in life. You always dream about big things, but you never think कि ये reality बन जाएगा, एक दिन. And इतना जल्दी, yeah, it's one of the fastest billions. It's this song has a life of its own. मेरे को पता ही नहीं है कैसे हुआ. But again, I love the combination of you and Nikhil because Nikhil की आवाज में बहुत Western music का influence रहा है, and you've also given it like a very different feel. I've loved it. And how important is Tanish Bakshi for you? Very important. If he wasn't there, Vaste wouldn't have been there, because it's his melody and his composition. So we went through a lot of drafts in terms of production and stuff, but the basic structure and the crux of it was, all Tanish Bakshi and Arafat sir, who's written the words. So he is very important. I feel like the producer and the songwriter is very important, and of course the singers then come into the picture, and then the video gets important, and then the whole package has to be plus, and then it becomes a hit. That's nice. That's really nice, and I'm glad that everything came together so well. It was like that perfect combination of great music, great lyrics, great voices together. I love this combination. तो हो जाए कुछ लाइनें वास्ते. वास्ते जा भी दूं, मैं गवाही माँ भी दूं, किस्मतों का लिखा मोड़ दूं, बदले में मैं तेरे जो खुदा खुद भी दे, जन्नत सच कहूँ छोड़ दूं, तुमसे ज्यादा मैं ना जानूं, तुमसे खुद को मैं
पहचान, तुमको बस मैं अपना मानूं माहिया, वास्ते जा भी दूं, मैं गवाह माँ भी दूं, किस्मतों का लिखा मोड़ दूं। हाय हाय, बहुत खूबसूरत, बहुत ही ज्यादा खूबसूरत। गलती हो गया था, माफ करना। अरे अरे, आप भी मतलब क्या, कहाँ माफी वगैरह मांग रही है। देखिए, आपको कभी माफी मांगनी हो तो गाने बस गा दो, और कुछ नहीं। Alright guys, sound check with Urmin यहाँ पर चल रहा है, and I have Dhwani Bhanushali today with me. You have loved her music, but we're going to get a little bit of inside information about the making of every song. क्या करती है Dhwani before she goes up on stage? In fact, Dhwani, क्या करती हैं आप before you go up on stage when you do live shows? फिलहाल तो सब नहीं है, बंद है सब कुछ। हनुमान चालीसा and vocal warm up. Really? नाइस। एक ऐसी छोटी सी जो सीक्रेट चीज है जिसके बिना आप रिकॉर्डिंग स्टूडियो में नहीं घुसती है, लाइक व्हाट इज दैट वन चेक दैट यू डू विथ योरसेल्फ? व्हाई डोंट यू टेल अस? I just do my vocal warm ups and I go. That's it, huh? Do you have anything? They're very funny. Like, so Yeah, I want to see it. See it. So there's this one exercise. So for example, if I'm doing Vaste, I do a bubble of this and go. So this I'll do for the melody and my this to get like a little cozy. Super. And do you have like a special kada or something that you drink before you start? I just drink warm water in life. What is this one thing that most of the times singers or vocal artists are not supposed to have, but Dhwani likes having? I don't. Yeah, I'm a very disciplined person like that. So no ice cream, no like aerated drinks. I don't like aerated drinks and ice cream. So I can't have anyway. I get acne because of dairy. Oh, क्या बात, चलो सॉर्टेड है, मस्त, वेरी गुड। टेंशन ही नहीं है लाइफ में यार, मतलब क्या बात है। वेरी कूल। ओके, टेल अस अबाउट योर कोलैबोरेशन विद गुरु रंधावा। इससे पहले भी इशारे तेरे वाज जस्ट सो मच फन, एंड अब एक बार फिर से आता है बेबी गर्ल। कुछ बताएं इसके बारे में। Baby girl is really fun. Guru is really fun. He's a very nice person and also a very brilliant artist. He's been very kind in terms of जब इशारे तेरे हुआ था तब मैं कुछ नहीं थी. I mean मुझे I think in a way he introduced me to pop. I would say that my first single was with him, and again we came back after 2 years. So basically उन्होंने गाना मुझे भेजा था लॉकडाउन में. He said इसको गा के you'll send. So I was like, yeah, I'll send. And then we decided that we'll do the song. And Remo sir also came on board to do like a video of this. And then everything was like really quick, really nicely done. And too much fun. Every time with him on set is too much fun. It's like you're chilling, you're not working. I have to tell you that आज सुबह से मैं एक ही चीज प्रैक्टिस कर रही थी, the step. So I have become a pro in the hook step of Baby Girl. I am really good at it now. So आप चाहे तो मेरी परीक्षा ले सकते हैं, but for that कीजिए. नहीं, उसके लिए आपको गाना भी पड़ेगा ना, ऐसे थोड़ी चलेगा. अच्छा, गाती हूँ. होके वे तैयार, चल शॉपिंग नो यार, तेरे बिल दा चुक ले पार, then I'm your girl, baby girl. होके वे तैयार, चल शॉपिंग नो यार, तेरे बिल दा चुक ले पार, then I'm your girl, baby girl. Baby, ਕੰਨਾਂ ਲਈ ਚੁੰਕੀ ਲੈਤੇ ਵੇ, ਹੱਥਾਂ ਲਈ ਕੰਗਣ ਲੈਤੇ ਵੇ, ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਸੁਣਨ ਨੂੰ ਦਿਲ ਕਰੇ, ਮੈਨੂੰ I love you ਵੀ ਕਹਤੇ ਵੇ. Such a fun song. Listen, why don't we, if you're going to just sing it, why don't you dance with me? We should do this together. How do you? Acha. Okay. Okay, we tayar. Challi shop. I don't know. Challi shopping no yaar.
सी अच्छा मैं सिखाती हूँ, कोई बात नहीं गाइस, इट्स फाइन, ध्वनि भूल गई है लेकिन मैं सिखाती हूँ। देखो ध्वनि, आपका जो नया गाना है उसके स्टेप्स कुछ ऐसे हैं, 1 2 3 4, 1 2 3 4, फिर सलाम नमस्ते स्टेप, एंड देन दिस इज माय फेवरेट स्टेप, Is this? वाह, 3 स्टेप्स मैंने सिखाए, चौथे स्टेप इट्स दिस। हाँ ये है, ठीक है, ओके चलो चलो चलो, आइए जी आइए, मैदान में आइए आप, रेडी? होके भी तैयार चले shopping no higher तेरे बिल दा चुकले पार दा नामियो girl baby girl। बहुत ही मस्ती भरा, आई लाइक दैट नखरे वाला गाना यार, बड़ा प्यारा सा बना है, एंड योर एंटायर wardrobe is phenomenal. No, these are my clothes that I've worn in baby girl. What are you saying? Except like the red top हाँ, and the pink dress, everything else is mine. अमेजिंग, बहुत बहुत कमाल लग रहा है, एंड मैडम जी के डांसिंग स्किल्स तो इतने कमाल के हुए हैं कि क्या ही बताएं। अभी देखना, मैं थोड़ा और फोर्स करूंगी ना तो पीछे जो जगह है वहां पर वो पूरा ऐसे सब करके दिखाने वाली है। So I have a small game for you now, क्योंकि हमारे शो का नाम है साउंड चेक विद उर्मिन। टेक्निकली अगर मुझे हिंदी में बोलना हो तो इट वुड बी ध्वनि चेक विद उर्मिन। Why do you think we started the entire episode with you? Woo! Oh, so smart. हाँ. OMG, just got it. यही है, हम लोग ऐसे ही सोच रहे थे कि साउंड चेक को हिंदी में कौन, ध्वनि भानुशाली, ये डिसीजन हो गया हमारा। आ गई मैं, क्या हो रहा है मेरे तो को? आ गया मैं, हो गया, ठीक है। मैं अपने पापा के साथ बहुत रही हूँ ना, तो sometimes my mom says you're not a girl. I don't see it. Alright, so the game is very simple. मैं आपको कुछ ध्वनि यानी कि साउंड सुनाने वाली हूँ, ये अलग अलग किस्म की साउंड्स हैं और आपको बस गेस करना है कि ये आवाज कौन सी है। हाथी। बात है, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। दूसरा, What? Can you? It's like someone like some animal is like. I didn't see that. try again. सुना। पानी पी रहा है कोई? लाइटनिंग की आवाज है। लाइटनिंग की ऐसी आवाज होती है, मेरे को ऐसा लगा कोई फिल्म कर रहा है। ओके, कुछ सीटी बजा रहा है। नहीं, ये चिड़िया की आवाज है। ओके, वन मोर। नोकिया। नोकिया। ये माइक्रोसॉफ्ट की आवाज है। ओह शिट। ओके, वन मोर। Kill me. No, नोकिया में वो हाथ मिलाते थे, इससे my bad. Oh, I'm so sorry. Please don't put this. नोकिया। ओके। No. Microsoft, my bad. One more. Hear carefully. Fart. And final. They had an originality to them. They had this. They were longer, of course, but they had a different soul to it. That's why they're still evergreen. ये मैं हूँ यार। Very well done. रुक के बोलता है वो मैं ही हूँ। You were fantastic, ध्वनि। आप ध्वनि में एकदम अव्वल हैं एंड आपका नाम इसीलिए बहुत अच्छी तरीके से सोच समझ के रखा गया है, जस्ट लाइक हमारे शो का नाम साउंड चेक सोच समझ के रखा गया है। You were so much fun, Dhwani. We really love you, and I'm absolutely sure that you're creating history every time with great music, which is why आपकी इतनी fan following तगड़ी होती जा रही है, and अब तो world wide आप उस सब follow कर रहे हैं, प्यार दे रहे हैं, so congratulations on that. Thank you so much for having me, Urmin. I had so much fun. The last fart sound, yes, fart sound was really cool. No, my favorite was Nokia. Let it be. Please,
100 आउट. लेकिन इस शो का एक छोटा सा फॉर्मेट है कि हम ऐसे ही नहीं जाने रह सकते. ध्वनि, आपके तो सभी गानों हैप्पी में की से, आऊं. आपके अच्छा, सभी गानों में से अगर आपको एक गाना चुनना हो दैट डिफाइंड दिस इंटरव्यू, तो वो गाना कौन सा होगा? साइको सही है. I knew it. Let's do this. ओ सैया रे, ओ सिर्फ सैया रे, ना छोड़ कलैया मोड़ के भैया, जल्दी से साइड हो, आया मोरा सैया साइको. Lots of love. Thank you so much. Thank you for being a part of Soundcheck with Urmin. And please, आपके जितने भी फैंस हैं जो फिलहाल देख रहे हैं देसी वेब USA, उन्हें क्विकली एक मैसेज दे दीजिए. Please take care of yourself, take care of your families, take care of everyone around you. Please wear a mask and sanitize, and please keep loving me like you always have. And please listen to good music. Alright, that was me. And keep watching Desi Web USA. वाह, क्या बात है, ये मेन था. Desi Web USA. The perfect dose to your entertainment.